Hello, ladies and gentlemen. Warm welcome again. This is Student of the Week, and today we have Muskan with us. I'm going to talk to Muskan, her journey, and why did she come to Canada after living that fantastic life and hockey life in India. So I would request Muskan to send me a request now, and next voice will be Muskan with us. Hello, everybody. Morning. Hi, Muskan. Hi. Okay, now we'll completely turn off our volume. Sure. Phone. And you guys, whoever is watching, please do share this live with all your friends and messages. There is a sign of share. Just share with everybody. And me and Muskan will be talking on air as well, exactly in 1 minute from now. So we have 1 minute to share this video with everybody. So whoever is watching, please don't forget to share this. Hi Vidaj. Hi Simran. Hi. Hi Darsh. Hi everybody. Hi Babik. Hi Mr. Verma. Hi Shivani. Hi Krish. Hi Babin. Hi Gaurav. Hi Kailash. Hi Urvish. Echoing voice. Do you guys hear the echo in the voice? Thanks, boss. Do you still have echo? Or you're good? Hi Dishita. Hi Dhoni. Hi Radhavan. Kencho. Hey Dhoni, do you hear the echo? Thanks, man. Bit. Okay. Let me still keep the live on. If it is echo, then I'll shoot again. Okay. For now, we'll be live on air with Muskan on radio. Muskan, ready? Ready. पेरेंट्स का प्यार घर का आराम छोड़कर पढ़ने आते हैं स्कूल घर Thanks. कभी भी दिन बिताते हैं डिटर्मिनेशन कुछ करना का रखता है उनको स्ट्रॉन्ग तभी तो फिर देश के लिए अपने जल्द दिखाते हैं स्टूडेंट्स को जानते सब है पर पहचानो मेरे यानी कि जैमिन के साथ शो आपका गुजराती के स्पेशल सेगमेंट स्टूडेंट ऑफ द वीक। And yes, this is Student of the Week. आज हमारे साथ મુસ્કાન સાથે આપણે વાતો કરવાની છે કે ભાઈ કેનેડા પહેલા તે કેમ આવી એની સાથે સાથે એ પણ જાણવાનું છે કે જ્યારે ઇન્ડિયાની અંદર વેરી વેલ સેટલ્ડ કરિયર હોય ફ્યુચર હોય તો પછી એ છોડીને કેનેડા આવવાનું મન કેમ થાય આ બધી જ વાતો કરીશું મુસ્કાન સાથે બટ મુસ્કાન હિયર વિથ મી લાઈવ એટ સ્ટુડિયો હાય મુસ્કાન હાઉ આર યુ Hi, I'm good. How are you, Jamin? आई एम फैंटास्टिक आपको गुजराती आती है Majama. क्या बात है चलो थोड़ी बहुत आती है थोड़ी बहुत that's fine okay so whoever is watching live on Instagram you can share this video with all your friends and family. We'll be talking with Muskan for next few minutes. So Muskan आप कब आए और वो क्या टाइम था कैसा माहौल था क्यों आए मैं लैंड हुई थी कनाडा में 29 अगस्त 2017. okay मैं यहाँ पे स्टडी परस्यू करने आई थी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन Okay. 3-year एडवांस डिप्लोमा जॉर्ज ब्राउन कॉलेज में. अच्छा Uh, 12 you- came after 12 after 12th, yes, that's right. was it easy to understand everything was it tough well Well, yes, you could say, because इंडिया में कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि मैं अकेली कहीं गई हूँ. इवन मेरे मैच होते थे, मेरी ट्यूशन, स्कूल, एवरी टाइम मम्मी या पापा कोई भी पेरेंट्स साथ होते थे. तो यहाँ एकदम अकेले आके it was a bit difficult, but it was a new experience and I've enjoyed it until now. That's great. But जितने भी लोगों को क्वेश्चन है कि कौन सा मैच की बात कर रही है और क्या बातें कर रही है तो लिसनर्स एंड इंस्टाग्राम व्यूअर्स को बता दें कि भाई वो बहुत अच्छी वाली बड़ी प्लेयर थी इंडिया में हॉकी की और हम जानेंगे कि कब ये हॉकी की शुरुआत हुई व्हाट वाज दैट
कौन से टूर्नामेंट्स में आप खेल चुके हैं और कितने टाइम से खेल चुके थे? सो स्केटिंग मैंने स्टार्ट की थी grade 1 में. हॉकी मैंने स्टार्ट की grade 4 या 5. After that, I played my first national when I was in grade 6. That's 2011. Okay. I went to Vishakhapatnam. Okay. That was my first national. I represented Chandigarh for about 7 to 8 years Oh wow. at the national level. Hmm. तो उससे पहले स्टेट लेवल होता था, इंटर स्कूल होते थे, फिर स्टेट लेवल में आपकी सिलेक्शन होती थी, एंड देन you used to get selected for the national team. So yeah, approximately you played for, I can say, 8 years, 10 years? 8 years, yes. National level पर skating में first class से कर रही हूँ, so 2004. Oh, wow. That's such a big time. Yeah. Ooh. Wow. तो फिर ऐसा कोई स्पेशल अचीवमेंट जो आपने नेशनल्स खेले, फिर ऐसा कोई स्पेशल मोमेंट जो आपने गोल किया हो, चिल्ला दिया हो, who I did, ऐसा कुछ मोमेंट ग्राउंड का? Yes. मेरा लास्ट नेशनल कनाडा आने से पहले हुआ था जोधपुर, राजस्थान. अच्छा. That was my semi-final match, and against Telangana. Okay. And I scored the golden goal for the team. Woohoo! So that Oh, was the golden moment, and that was one of my last matches. So yeah, and then I saw my dad. He was crying with happiness. Coaches, team, everyone was very Can happy. you explain more about this golden goal? What was that moment? कितना टाइम था, कैसा ग्राउंड था, कितने लोग देख रहे थे, कैसे वो गोल लगा, कहाँ से आपने स्ट्राइक किया, मतलब everything. I want to know everything about that goal. Okay, so पहले मैच स्टार्ट हुआ. We scored just in a few minutes, 2 या 3 minutes में. Okay. Then they scored. Okay. So 1-all. We scored again, 2. They scored again, 2-all. Game खत्म होगी 2-all पे. Okay. Then they said कि अब we're gonna have the golden goal moment. So they give you a few minutes. और जिस टीम ने पहले गोल कर दिया वहाँ पे मैच खत्म हो जाता है. So it was my first year in senior team. Okay. और मुझे ऐसा लगा था कि मैं मेन 5 जो प्लेयर्स हैं उसमें नहीं जाऊंगी पहले, because that वो बहुत इम्पोर्टेंट मोमेंट था. बट जो मेरी सीनियर कैप्टन थी उन्होंने बोला नो, यू हैव टू प्ले, यू हैव टू स्ट्राइक, और उन्होंने गाइड करा कि हाउ आर यू गोना डू इट. शी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, जस्ट लाइक चक द इंडिया. मुझे पहले 2 मिनट में गोल चाहिए. अच्छा. स्टार्ट हुआ and within I guess 40 to 45 seconds You scored. I scored, and that was the best moment of my life, you could say. Yes, that was the best feeling. It was not a gold medal match, but it felt like that. Everyone jumped into the ring because after that we had the final. तो अगर वो जीतना बहुत important था. Yeah, it was amazing. Wow, explain me about the crowd and the captain, your father, you already said, but Yes. your inner feeling. Well, everyone was on me. फिर सबने gloves उतार के फेंक दिए, and then yeah, everyone was on me. We are crying and shouting, and yeah, then my mom, she never comes and watches such matches जो बहुत crucial होते हैं, because she can't. तो उनको मैंने उसी टाइम फोन करा. She was at the hotel. She was very happy, crying. Everyone, it was like a really good moment. I wish someone filmed it, but उस टाइम पता नहीं होता कि क्या होना है. So no. जो इधर है ना वो कहीं नहीं जाने वाला. True. So you have fixed everything eyesight. जो मैं देख रहा हूँ कि आपके आगे के आगे वो golden goal घूम रहा है. Yes. वो ground वो hockey stick. Your father. Yeah. Right. It was. I can sense it. That's awesome. Okay, so ये golden moment था, golden goal वाला मुस्कान का. फिर उसके बाद टिकट कट गया कनाडा का आने के लिए. हाँ जी. फिर वो moment कैसा था, and how did you convince your mind that I'm leaving this hockey world and coming to Canada to pursue my future? After that national, I had my 12th board exams. But Canada आने का नहीं, abroad आने का plan बहुत पहले से था. Okay. You have to go. First, I planned to go to Australia because all my family is there. But then due to some reasons, I planned, okay, let's try Canada.
So after 12th, I started preparing, giving my IELTS and stuff. I knew it's gonna be very difficult. मतलब हॉकी छोड़ना बहुत मुश्किल था. But to be very honest, if you're not a cricket player in India, you are not recognized. Very To be very honest. very true. I So mean, I फिर- would 100% agree with you. yeah. So parents, I'm the only child. Oh, Yeah. So parents wanted कि it's okay, go explore the world. You don't have to be here. We always support you. So wow. yeah. I mean, three cheers for your parents here, because whoever is listening here or on Instagram watching us right now, it is very much important to let your kid fly. He or she can achieve n number of things which you might not have thought. But if you don't do that, your kid won't fly. And that's what Muskan's dad and mom did. And look at her right now. Yeah. Wow. Okay. So, वो 12th exam हो गई, कनाडा आने का plan हो गया. So what was that call? Maybe if I'm not wrong, there was some nationals selections and you got a call, and then Yes. what was that? I remember my coach called my dad telling it was around May or June कि trials हैं Indian team के. Wow. So Muskan can go ahead. Mhm. चंडीगढ़ टीम से I would recommend her. तो फिर but मैं नहीं जा पाई. डैड ने मेरे से पूछा, मैं I remember I cried. I'm sorry if I cry now. No, I do understand. It's difficult. Yeah, it was. Sorry. No, that's okay. So yeah, we decided कि इस टाइम फ्यूचर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्टडी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. Cause anyways गेम इंडिया में ज़्यादा देर तक नहीं चलनी थी. At some moment I had to come out, as I told you. Was it that difficult? वो decision लेना उस time पे? Very. Yeah. I used to अपने skates और hockey देख के I used to cry. Do you still have it with you right now? India. Okay. Yeah, India. I didn't bring it with me. It was well, कि वो allow ही नहीं करते इतना baggage. But still बहुत memories थी. फिर मैं वो यहाँ नहीं लेके आना चाहती थी. So it's good, safe in my Almira in India. You're making me cry. Well, this is life that we chose. True. And we are going ahead with it. It's been 3 years right now here. And फिर उसके टाइम मुस्कान ने इधर हॉकी कंटिन्यू किया कि नहीं किया फिर? Yes, फिर मना करा उनको, नहीं गई. Then I came here. I remember जब मेरी फ्लाइट थी उसके एक वीक बाद मेरे फ्रेंड्स टीम इंडिया खेलने गई थी. तो अच्छा लगा उनको देख के, पर कहीं ना कहीं ऐसे भी लगा कि मे बी आई कुड बी देयर. Well, anyway, so I came here. First थोड़ा सेटल होने में टाइम लगा. I remember it was my birthday, 27 September. After a month I landed here. Happy birthday, by the way. Thank you. I landed in August. So after a month, मेरे birthday वाले दिन मैं college enter हुई हूँ. And then बिल्कुल सामने, college के सामने, I saw a poster there saying women hockey players needed. Whoa! So that was like the best birthday gift. My goodness. Okay. Yeah, hockey here is ice hockey. Okay. Yeah, but hockey. So I contacted them as soon as possible. उनको मैंने अपनी सारी achievements बताई. They were very happy. And George Brown ने मन्नू सारी kits, hockey, they provided everything. Nice. So then I played that season. I played another season. So 2 years I played for the George Brown Huskies team. फिर उसके बाद third year it was difficult to manage studies, job and everything. I had my co-op and now this COVID. So फिर वो छूट गया. But I want to continue again. हॉली हो जाएगा. हौली हो जाएगा. हाँ जी.
Nice, nice. Whoever is commenting right now on Instagram, praising your work, one of the page was I always appreciate हमदर्द मुस्कान का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता, दोस्त तो मिल जाते हैं हर रास्ते पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं. Thank you so much. So proud of you. It's life. You will get more opportunities, and so many people are posting. Even Dhwani is appreciating your work. Thank you so much, people, for posting your comments here. So then, student life की शुरुआत हुई. Hmm. फिर कैसे challenges थे उस समय पे student life? शुरू में 1 month was very good because I was living with my masi. So that was amazing. वो पता लग रहा था कनाडा आया है, मजे कर रहे हैं, मासी छोड़ती थी, लेके आती थी. फिर 1 month बाद I realized कि अब बहुत high time I should move out and then start living अपना खुद से. So me, my cousin and 2 of my friends came with me India से. We studied together. तो फिर हमने घर ढूंढा, we moved. और तब ऐसे लगा कि जैसे किसी ने छोड़ दिया है ना कि बस अब अपना हाँ वैसा बिल्कुल वैसा हुआ. शुरू में बहुत ब्रेकडाउन्स हुए थे, बहुत ज्यादा. आई यूज्ड टू मिस माय फैमिली अ लॉट क्योंकि वो सिंगल चाइल्ड, सो यू गेट ऑल द अटेंशन, राइट? और यहाँ पे कोई पूछता भी नहीं है. सो वो बहुत इम्पोर्टेंट है जब आओ. Breakdowns होंगे, but stay positive. That's what I suggest. My family and friends, whoever is listening and watching, thank you so much. You all have been wonderful. सारे ऐसा कोई नहीं है कि जिसके साथ मेरा कोई बुरा एक्सपीरियंस हो. Everyone has been wonderful, and I feel blessed कि ऐसे लोग मेरी लाइफ में हैं. Because you have been wonderful with them too. Thank you. I try to. Yeah. So ऐसे कोई specific experience जो अच्छा experience रहे हो आपको student life में, or if you want to inform other students as well? Well, yes, Canada is a land of opportunities, to be very honest. Dreams come true here. कुछ भी छोटा सा ड्रीम है, इंडिया यू ड्रीम ऑफ एन आईफोन, जस्ट से इट्स लाइक वेरी है ना छोटा ड्रीम. सो इथे आके यू कैन अचीव दैट वेरी इजीली. You work, you see something, you work for it, you can get it. Anything. Yeah, but we just need to work hard and smart. How fluent you are in Punjabi? बहुत ज्यादा. अच्छा. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਨੇ ਆ मैं पंजाबी च गल कर सकदी हां, पर ਤੁਹਾਨੂੰ समझ नहीं आनी. कोई नहीं, मैं थोड़ी समझ सकता. चलो ठीक है. फिर कोई ऐसे experiences जो आपको नहीं हुए हो, जो you learn it and then and it's part of life, not good or bad, those are experience. Do you want to share those? In Punjab? Okay, sure. ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਲਾਂਡਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ. ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਾਂਡਰੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ. I still remember ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲਾਂਡਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ. ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਵਾਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ about 2 kilometers. ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਗਰਮੀਆਂ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ. So that was like the hard times. ਫਿਰ ਬੱਸਾਂ. You don't have car too? No. Until now, because right now I'm living in downtown and my work is like 15 minutes away. So I really don't think I can save that for future. So how did you go to laundry then for those 2 kilometers? Paddle. Really? In winter? In winter as well. कई बारी बस मिल जाती सी, but winters बसां भी बहुत डिले होनी है. बस ही नहीं मिलती सी. But ठीक है, you learned out of it. You become strong and hard. फिर बसां बहुत मिस हुई हैं. अभी तक I run sometimes when I see the bus coming or the streetcar or anything. I run, and then I've had so many experiences. जिथे bus driver कह रहा है, oh nice run. Nice. So yeah. तुम्हें क्या पता कहाँ छोड़ के क्या क्या है, right? तो फिर तो करेंगे. Yeah, age experiences. ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ experience restaurant 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਮੈਂ first time restaurant ਗਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ. Okay. First time when I came in Canada. Proper restaurant, ठीक है. और ਇੱਥੇ टिप देनी बहुत जरूरी है, right? Good gesture, true. So I was paying, instead of $500, which is $5, I pressed 5 and okay. So I thought that that's $5, but that was 5 cents. वो waiter ने बहुत बेइज्जती करी थी मेरी. Oh, waiter, he was like, oh, why did you even leave 5 cents for us? I agree with that. So I didn't know, and I'm like, I'm really sorry, I can pay it again. I didn't know.
He's like, no, it's okay. पूरी उच्ची देनी बोला वो, and everyone was looking at us. So that was one of the first experiences. But then we learned that 500. Yes. Yeah. Yeah. Okay. Nice, nice, nice. With student life, tough it is to manage the assignment, study, plus, your game, and plus study, plus job. Yes, it is tough. ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ 1 ਘੰਟਾ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ, ਸੋ most of the times, not sometimes, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕਲਾਸ ਲਾਣੀ, then I used to sleep in college for a bit because ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਹੈ. I used to sleep in college and then go for my work. I used to practice 2 days a week, Okay. Wednesday and Friday. ਉਦੋਂ ਵੀ I used to stay in college, sleep there for a bit. ਫਿਰ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਕਿੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਕੀ ਕਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ. So it is quite hard. Assignments, I remember it was hard time. Now I'm happy. I'm done with school. I miss school life, but I'm happy. क्योंकि job है, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ exams ਹੈ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ assignments ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, laundry ਕਰਨੀ ਹੈ, you have to do pande and cook food for yourself. So it is So what is more easier, to stay close to college and pay a little bit more extra money, or stay a little far and save some? it depends on your pocket. ਉਦੋਂ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ. ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਭੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ अभी तक है? ਅਭੀ ਥੋੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ. ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪੀਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਖਾਇਆ, ਪੀਜ਼ਾ ਤੋਂ, ਦੈਨ ਜੂਨੀਅਰ ਚਿਕਨ, ਉਹ Okay. ਹਜੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਲਾਈਕ $5 ਲੰਚ, ਹਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਂਦੇ ਇਟਸ ਨਾਟ ਗੁੱਡ ਫॉर ਹੈਲਥ, ਆਈ ਨੋ, ਬਟ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਖਾਇਆ. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਤੀ I used to work until 10. ਫਿਰ I used to reach home 11:30. So which is better? What I'm saying, what I'm trying to understand is, which is better, stay near to the college or stay I a little would far and pay less? say yes, near. Okay. Right now I'm in downtown, so I feel it's easier Then why did you stay to commute. in North York earlier? Because first I didn't have a job, only GIC, so I had to manage everything. Did you face anything specific in experience at home? Where did you stay? Any such experience in the home? Where I stayed? Yeah. Yeah, I told you the food was something like not our cup No, of no, we didn't talk. What is it? Oh, okay. So it was a non-Indian lady. Okay. I used to stay there with all my friends. It was kind of a homestay. So ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ. ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੂਡ ਇਨਕਲੂਡਡ ਸੀ 500 ਚ, ਬਟ ਉਹ ਫੂਡ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਪੋਰਕ ਬੀਫ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਸਟਾਈਲ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ. ਬਹੁਤ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੂਰੇ ਘਰ ਚ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਘਰ ਚ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਸ ਨਿਊਟੇਲਾ ਬ੍ਰੈਡ, ਬੇਗਲ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ. Yeah, so ਉਹ ਔਖਾ ਸੀ. But ਹੁਣ So both experiences are kind of nice. Yes. But you have to choose what you want. Exactly. If it is okay with your pocket, you can stay near. Yeah. If it doesn't okay with your pocket, maybe stay far and pay less. Pay less, yeah. That's good. Nice. Hockey में सोती है अभी? अभी बहुत ज्यादा याद आती है. अभी भी जब मेरे फ्रेंड्स नेशनल स्टेट लेवल ऐसे टूर्नामेंट खेल रहे होते हैं एंड दे पोस्ट पिक्चर्स, बहुत याद आती है. मैं अभी अपने कोच को बोलती हूँ मैनू हॉकी वाले ग्रुप च नहीं कढ़ना, जो हमारा व्हाट्सएप पे ग्रुप है. ही इज लाइक ओके डोंट वरी, मैं सारा कुछ दसदा रहूंगा तेनू. फिर ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ हैं ही टेल्स मी एवरीथिंग, ਇਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਇਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ. कभी गुस्सा आता है कि गोल ऐसे करना था, क्यों? हाँ आता है, बहुत आता है. बट इट्स ओके. फिर ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ स्पोर्ट्स पर्सन ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗੁੱਸਾ मैनेज करना आ ਜਾਂਦਾ है. That's nice. Good to know. Okay, that's nice. और फिर आगे वाले टाइम में मुस्कान क्या करेगी फिर? अभी आई एम वर्किंग फुल टाइम एज अ सर्विसेज सुपरवाइजर एट Staples Canada. Congratulations. I just got the job 2 months ago. Nice. After I graduated, I worked there part time. Co-op.
co-op as well. Everything was there. For 3 years, I worked there part-time. And then as soon as I graduated, I talked to my manager. They liked talking to me, and then they liked me. Nice. Yeah, they offered me the job. So did you observe that specific thing? We have to be more polite and gentle compared to India here. Did you? A lot. ਜਿਹੜੇ 3 words ਹੈ sorry, excuse me, please, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ you open the door for someone, no one even cares. Correct. कोई sorry thank you तो कोई दूर So की बात whoever listening here, students and especially who is planning to come here, जितने भी लोग रेडियो पे सुन लो तो मालूम ही नहीं भाई, हम तो ये रट्टा मार लिए। जितने भी लोग इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, so thank you, sorry, excuse me does matter here. ऐसा नहीं है कि इंडिया में मैटर करता, इंडिया इज वेरी नाइस कंट्री और वर्ल्ड में कहीं पर भी मैटर करता होगा, एंड आई डोंट डिनाई दैट, बट कनाडा में इसलिए क्योंकि मैं इधर शो कर रहा हूँ, कनाडा कंट्री की बात कर रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई इधर बहुत मैटर करता है। कोई अपने दरवाजा भी खोलिए, जैसे मुस्कान ने बताया, तो आपको जो आज आपने खोला है तो आपको सुनने मिलेगा, या फिर के लिए खोल रहे हैं तो भी आपको, यू नो, इट्स वाइज अप। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। Any last message before we close our interview? Any last message for the students? Sure. Well, you should stay focused. इस country च गलत राह ते जाना बहुत easy है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। So stay focused, stay positive, and talk to people, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, weather ਥੋੜਾ cold ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਕਰਦਾ, ਡਿਪਰੈਸਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ, ਫਰੈਂਡ, ਐਨੀਵਨ, ਗੱਲ ਕਰੋ if you have any problems. Stay focused, positive, pretty much, yeah. That's ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ important ਹੈ। Nice. Thank you so much, Muskan. It was a pleasure to you today. Same here. So this was Muskan on air with us, जिनके साथ बात की, हॉकी को मिस किया, स्टे फोकस बोला, और मुस्कान का ये लाइव इंटरव्यू आप देख सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम, यानी कि मेरे एंकर जमीन ANCHORJYMIN, and this also will be posted on my YouTube channel ANCHORJYMIN. If you have any student whose story is inspiring, do let me know, or do let us know on Red FM Toronto page, or you can call us 9579055555. Next, back-to-back songs. Stay tuned. आप सामने रहो, अपना गुजराती show. Thank you so much, people, for watching us. Don't forget to share this video with all your people. Thank you again. Bye-bye.